Hello everyone, welcome to next lecture on Simpson's one-third rule. In the last lecture, we have discussed the new Simpson's one-third rule formula and also one example on Simpson's one-third rule. In today's lecture, we are going to discuss the next example. Here the next example is use the Simpson's rule to find integral 0 to 2 under root of 1 plus 4 sine square x dx by dividing the range into 8 parts. See what is the meaning of dividing interval into 8 parts. Here suppose we have given interval a to b and we want to divide this interval into 8 parts. So here first part is this one, second part, here it is second part. Now for third part, in this way we want to divide the complete interval into 8 पार्ट. इस पार्ट्स को देख के आप बता सकते हो ये फर्स्ट मीन्स क्या है, एक फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल. इट मीन्स we are dividing total interval into 8 parts, that nothing but 8 intervals. So the 8 parts, it's nothing but 8 intervals. So therefore 8 is nothing but our value of n that represent total intervals. So again here in this question n is known, then we find the value of h. From the question we want to find I is equals to integral 0 to 2 under root of 1 plus 4 sine square x dx. From this term here integral start from 0, it is called initial term x0 equals to 0 up to the last term is x0 plus n h is equals to 2. So therefore the given term is x0 equals to 0, x0 plus nh equals to 2, and also we have given n equals to 8. Put this value in this equation. Suppose it is equation star. If we put x0 and n in this equation, then we get h equals to. So here equation star imply here x0 is 0 plus n is our 8, h equals to 2. Therefore h equals to 2 by 8, that is 0.25. That means here x0 is 0 and x0 plus nh is 2. इस x0 से हमें x0 प्लस nh के ऊपर जाना है बाय टेकिंग इंक्रीमेंट 0.25. तो x0 के अंदर हम 0.25 ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा x1. अगेन ऐड 0.25 तो वी गेट x2 एंड सो ऑन अप टू में x0 प्लस nh दैट इज वैल्यू 2 तक के एक्सपांड करना है. तो इसी गिवन डाटा का यूज़ करके हम क्या करेंगे, टेबल फाइंड आउट करेंगे. जो हमने y इज अवर फंक्शन, that is y equals to 1 plus 4 sine square x. Here starting value of x is 0 and take the increment by 0.25. Now add 0.25, then we get 0 plus 0.25 is 0.25. Again add 0.25, so we get 0.5, then 0.75, put these values of x in our function, then we get corresponding values of y. So here x equals to 0, if we put x equals to 0 in our function, then it is 1 plus 4 sine 0 is 0, so here under root of 1 is 1. So corresponding to x equals to 0, we get y equals to 1. Similarly put 0.25 in this term, then we get under root of 1 plus 4 sine square 0.25. अब ये फाइंड आउट करने के लिए यू कैन यूज कैलसी.
और कैल्सी को यूज़ करते वक्त आप लोगों को कैल्सी को रेडियंट मोड पे सेट करना होगा। किस तरह से करेंगे रेडियंट मोड पे? शिफ्ट मोड अगर प्रेस करते हो आप इन साइंटिफिक कैल्सी डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, उसके अंदर रेडियंट के लिए रेडियंट लिखा होगा, तो उसके ऊपर प्रेस करके आपको कैल्सी को फर्स्ट रेडियंट के अंदर सेट करना है। तो नेक्स्ट y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी? 1.1175। नाउ नेक्स्ट 0.5 के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है y की वैल्यू, तो ये मिलेगी 1.3854। इसी तरह से हम रिमेनिंग वैल्यूज निकालेंगे और देयरफॉर वी गेट दिस टाइप ऑफ टेबल। नाउ इसी के अंदर अगर हम फर्स्ट वैल्यू, ऑलवेज हम फर्स्ट वैल्यू को y0 कहते हैं, ये x0, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज y0, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, दैट इज y0 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली सेकेंड होगा y1 इक्वल्स टू, देन थर्ड इज y2, y और जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था, इफ वी गेट n इक्वल्स टू इवन, तो यहाँ पे n इज 8। इफ n इज इवन देन वी हैव टू यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल। इफ n is odd then Simpson's 3/8 rule, and you can use trapezoidal rule for any n, but now here n is 8, then we can use Simpson's 1/3 rule, and we know the formula of Simpson's 1/3 rule. So we first write formula and then put the value of our given function. So here our integration is integration is I is equals to 0 to 2 under root of 1 plus 4 sine square x dx, and Simpson's 1/3 rule is h by 3 first term plus last term is y8 plus 4 times of odd term, that is y1, plus 2 times even terms, 2 times even term. So in even terms we get y2, y4, y6. Here we are not taking y8 because this y8 we have already taken in first bracket. So here we are just take in between values in between y0 to y8 in these two brackets. Now put the value of y0, y1, y2 and all the functions, then we get, after putting the values of our function, we get this type of term. Now it's just a simple calculation. You calculate it by using calculate, get final answer, this one. Thank you. Like, share and subscribe.